Hello everyone, this is Nasir Anwar, the founder of Mentors and General Manager of Enerpact, which is providing electrical testing, condition assessment, trainings, consultancy services to the critical industries of Pakistan. In today's mentor session, we have invited Mr. Muneeb and Miss Amna from Solvecon to discuss about this consultancy idea in the entrepreneurship in the engineering and other related sectors of the market. Thank you, Ms. Amna, for being with us, and Muneeb, very thanks to join with us. Thank you so much, Nasir. Thank you so much for having us. And firstly, we'd like to congratulate you for having such a brilliant forum. जो आपने ये इतना एक gap जो है आपने bridge किया हुआ through this amazing forum that you have of mentors and then additionally of NRPAC as well. So congratulations for starting this forum, and mashallah it's doing so well with such a huge followership. And we thank you for having us on this forum so that we can talk about our new venture. So thanks a lot for that. So I'll quickly introduce myself, and then Mohit will introduce himself. Thank you very much. Yeah. So I'm Amna Sarfaraz, and I am the So I'm the Chief People Officer and the Business Development Head for Solvecons. And and I and Mohit, both of us, we actually met in Angro only. हम लोग दोनों Angro से हैं. So I'm from Angro Fertilizers, and Mohit is from Angro Energy. But हम Angro Corporation से हैं, and right after my masters from let's talk about your idea of business entrepreneurship. Okay. So okay, I'll tell you about that. So I was just quickly telling you that right after my graduation from IBA, मैंने Angro में ही 10 साल काम किया है, and we left our corporate associations to start this entrepreneurial venture because entrepreneurship is something that we always dreamed of. मतलब हमेशा से हमारा like-minded हमारे साथ और भी colleagues हैं, हमारे ex-colleagues. So that is something that we always dreamed of doing, and we started this venture, and it's with Solvecons, and it's primarily a consulting firm. But the way it's different from other firms is that we are leveraging on technology. So it's essentially a technology-based consultancy, and जिस तरीके से करीम का मॉडल है, करीम kind of does not have any assets of its own. अपनी गाड़ियाँ नहीं उनकी, लेकिन वो दूसरों की गाड़ियों पे they kind of bridge that gap with the need. So we tap on freelance consultants and we bridge them with the clients. So that is what we primarily do. And because of that, this brings down our fixed asset costs. We don't have any consultants who are on our fixed payroll, and उसकी वजह से हमारी जो overall cost है, overheads कम हो जाते हैं. And then post the pandemic, because the entire world is now aligned on remote operations. Puri dunya knows how to work, remotely. So we don't have any physical office space as well, and that all these bring down our overhead costs. And this gives us a very, very massive cost advantage as compared to our, other consultants in the market or our competitors. And we are passing on this benefit, this cost advantage benefit to our clients. And this is what makes us very, very unique. So that is the value addition or the USP that our company has. We are giving like top in the line excellent solutions, consultancy solutions in an economical cost as compared to other consultants, because we are passing on this cost advantage that we have to our clients. That's one USP that we have. The other USP that we have is that we are very because our consultants that we're tapping on, these are people who have decades and decades of experience in the Pakistani market. These are people जो कि top positions पे रह चुके हैं पाकिस्तान की बड़ी companies में, who face the on-ground challenges in Pakistan. So the solutions that they're providing are very relevant to the Pakistani socio-economic and cultural factors. अब जैसे मैं खुद भी एंग्रो में थी, हम directly McKinsey is one of it's a global name, and we used to work directly with McKinsey, and McKinsey has out of the box solutions, and there's no doubt about that. But out of the box solutions, in my personal opinion, I thought that they were not always very relevant to the challenges that we have in the Pakistani market, because Pakistan में काम किस तरह होता है वो शायद बाहर वाले लोग नहीं समझ सकते कि किस तरीके से होता है. But again, our consultants, they have worked under these challenges, they have solved these problems, तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह काम होता है and how we have to tackle those. So it's very relevant to the Pakistani market. Okay, Amna, आप वैसे मतलब किस industrial sector के अंदर you are working right now, and you have the partnership with the top of consultants for that industrial sectors or other sectors of the businesses, please. So we have we're tapping on because हमारी अपनी जो core team है उसकी अपनी expertise भी, and also the consultant base that we have formed so far. We are focusing on petrochemical sector. We are focusing on fertilizer sector. We are focusing on process sector. We are focusing on the energy sector,
And then we are also focusing on HRM, human resource management related solutions. So these are currently the sectors that we are focusing on, but we intend to further expand it. Our vision is to further expand it and to be a one-stop solution to all consultancy needs. But currently ये expertise तो हमारे पास है, and we're tapping on more consultants to to be an ultimate one-stop solution for all consultancy needs. So that is what our vision is. And the team you are formatting right now, जो कि consultants के are inside Pakistan or the people outside Pakistan? Outside Pakistan, so the consultants that we have right now are, like I said, our USP is that we are very, we provide solutions that are relevant to the Pakistani market. So our consultants are currently, limited to Pakistan, but again, we about the remote operations. In fact, like they're not limited entirely to Pakistan. Let's say हम एक HRM का project कर रहे हैं. The consultant she's based in Malaysia, and she's working remotely from there. So and she has some degree from Malaysia as well. So they are from outside Pakistan, and quite frankly, it becomes very redundant. When you are working remotely, so it just becomes redundant. So these are the solutions that we're providing. Okay. Yeah. Okay. And is there any projects you have in your hands right now related to the industries? Bilkul. So we have we currently have we have a few projects in the pipeline. Like we have projects related to PVC. We have projects related to HRM. A couple of projects related to HRM, and a few projects related to the energy sector. So ये हमारे projects अभी pipeline के अंदर है. But they work in progress, and we are heavily. Yes. Because we are building our brand, so we're heavily relying on the testimonials. Once these projects are completed, so we are we are going to ask them for testimonials as well, and then naturally, हमारे satisfied customers make for they are the strongest brand ambassadors. So वही हमारे brand ambassadors हैं. But अभी project जो है, क्योंकि वो सारे चल रहे हैं, once they are completed, then we post them on our website as well, solvecons.com. Please do visit our website. That's our platform. That's wonderful. Mohit, this is a very different idea in Pakistan. इससे पहले मेरे ख्याल से कोई consultancy firm ऐसी है ही नहीं जो कि इस चीज को bridge कर रही हो. तो what are the difficulties you have seen starting this business, this type of business? Thank you, Nasir, for giving the opportunity, first of all, or to all of your viewers, welcome everyone. अच्छा, ये जो स्टार्टअप का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये आमना ने जिस तरह आपको बताया, दिस थिंग स्टार्टेड वे बैक व्हेन वी वर इवन ड्यूरिंग आवर अंडरग्रेड. तो होता ये था कि हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट आया था कि जब हम लोग अंडरग्रेड में थे ना, तो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरा प्राइमरीली जो एक बैकग्राउंड है वो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है. सो आई स्टार्टेड एज एन मैकेनिकल इंजीनियर, और फिर मोर आई वर्कड इनटू इट, देन हुआ ये कि जाना कहते हैं अभी went into Angro. We had a stint for 4-5 years over there for a third world project, and then I went into the current position which I have. तो अच्छा, तो जो आइडिया जो आपने जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें ये था कि 3 चीज़ें जाना कहते हैं प्राइमरीली हमें देखनी थी, जिसकी वजह से जाना कहते हैं हमें इश्यूज आते थे. एक तो फ्रीलांसर्स के पास जो एक ब्रिज नहीं था कनेक्शन का, कि जाना कहते हैं इंडस्ट्री में अपने सोल्यूशन को लेके जाएंगे. इंडस्ट्री के पास कोई ऐसा कनेक्शन या एक ब्रिज कह सकते हैं वो अवेलेबल नहीं था. तो प्राइमरीली एक ये चीज़ थी. दूसरी चीज़ ये थी कि जो हमारा फ्रीलांसर जो पूल है, उनको एक कंसिडरेशन चाहिए थी कि जाना कहते हैं कोई एक ऐसा उनके पास एक सब्सटेंशियल प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसके ऊपर वो बैंक करके अपनी सर्विसेज को आगे कन्वे कर सकें. क्योंकि होता ये भी है कि आपके पास एक तो बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अवेलेबल हैं इस वक्त. ये हम नहीं कहेंगे कभी भी कि जाना कहते हैं कोई ऐसा ही कोई एक हमने डिस्ट्रप्शन मार्केट के अंदर क्रिएट किया अभी, कि जिसमें जाना कहते हैं कि नया कॉन्सेप्ट है और जाना कहते हैं. लेकिन उसमें होता ये था कि उनकी प्रेजेंस एक तो पाकिस्तान में करंटली है नहीं इस तरह, क्योंकि अगर आप जाना कहते हैं कंटेम्प्रेरी प्लेटफॉर्म्स का नाम लें तो वो पाकिस्तान में जाना कहते हैं उनकी अभी कोई सपोर्ट टीम भी नहीं है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अभी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, पेपैल के अभी जाना कहते हैं वो भी ऐसा जो उसकी इंटीग्रेशन ही लेके आए. तो एक तो वो चीज़ थी. दूसरी चीज़ ये थी कि फाइनेंशियली जाना कहते हैं हमें उनको गारंटीज प्रोवाइड करना है, क्योंकि एस्क्रो की जो सर्विसेज हैं वो भी पाकिस्तान में इस तरह अवेलेबल नहीं है. तो ये दूसरी चीज़ थी जो है जिसकी वजह से हमने कहा कि हमें यहाँ पे एक जाना कहते हैं रोल है जिस पे जाना कहता है पॉसिबली हमें पोजीशन कर सकते हैं. लेकिन अगर देखा जाए मार्केट के अंदर तो बिग नॉच कंपनीज जो होती हैं, दे नॉर्मली दे ट्रस्ट ऑन द बिग जायंट्स एज वेल. तो इस फैक्टर को, इस गैप को आप कैसे कवर करेंगे? मतलब दिस इज अ वेरी
a very big barrier what I'm seeing right now. What you can say? ये बहुत पर्टिनेंट है, खास तौर पे पाकिस्तानी माइंडसेट के हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तानी हमारे जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उनका ये होता है कि अगर यानी कुछ स्टडी करानी है तो वो उसके 2 टियर्स होते हैं। अगर यानी कहते हैं आपने लेंडर्स से फाइनेंसिंग एश्योर करानी है तो यानी कहते हैं हमेशा आपको ये चाहिए होता है कि एक बैंकेबल स्टडी हो, और बैंकेबल स्टडी यानी कहते हैं नो नेम से यानी कहते हैं कंसल्टेंट से नहीं हो सकती। तो इसमें देखें हमारे पास इस वक्त जो आमना ने नाम लिया था भी एक पीवीसी का या जाने कहते हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर, तो उसमें हमारे पास जो है ब्लू चिप कंपनीज को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए जाने कहते हैं उसी के सेगमेंट का हमारे पास कंसल्टेंट भी अवेलेबल है। तो इट्स नॉट लाइक कि हम जाने कहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट कंसल्टेंसी बेसिक हम जाने कहते हैं सामने आपको पिच करें तो It's mean you are working in the power plant, fertilizer, oil and gas, chemical, and the processing industries. इतना डाइवर्स नहीं है कि जाने कहते हैं हम बहुत सारी जाने कहते हैं इंडस्ट्रीज को कैप्चर करें। एक जो है एक फाइन ब्लूप्रिंट है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं अभी जाने कहते हैं, क्योंकि हम एक बहुत ही नैरो बैंडविड्थ पे जाने चलना है, ताकि ये ना हो कि हम जाने कहते हैं डिसअरे की तरह जाने कहते हैं ऑल ओवर द प्लेस हो जाए। तो नहीं है अच्छा, ये सेशन जो है जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि इसको बड़ी डाइवर्सिफाई किस्म की ऑडियंस इंडस्ट्री से रिलेटेड सुन रही है या इसको लेटर सुनेगी, तो आप किस सेक्टर के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं? मतलब अगर स्पेसिफाई कर सकते हैं आमना या मुहीद आप कि हम इस सेक्टर के लिए वी हैव द सोल्यूशन फॉर यू, द गाइस कैन कांटेक्ट यू और देन द कंपनीज कैन कांटेक्ट यू, तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनकी आप बात कर सकते हैं और ऐसी कौन सी कंसल्टेंसी है जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं? So like we mentioned earlier as well कि हमारी जो core team है even that has the expertise for petrochemical and energy sector and fertilizer sector and process related जितने भी and even project management and HRM. So I myself I have an experience of I've worked in Engro within HR and supply chain management. But like I said, हमारा model is to bridge clients to consultants. So whenever a need arises from the consultant, then we मतलब we already have a consultant pool. We firstly see within our pool कि अगर हमारे pool में existing consultant base is available there, then we obviously bridge that gap. नहीं होता तो then we source for consultants. So even right now it's we have limited our scope because जैसे मोहित ने बोला कि we don't want to be like all over the place initially, but in the long run we do have this vision to be a one stop solution. But currently ये मैंने आपको 4 जो सेक्शन 5 सेगमेंट्स बताए हैं, which is energy sector, petrochemical sector, process, fertilizer and HRM. So these are the solutions we are currently we have a strong consultant pool to provide a very very relevant, very very world class solutions. So this is what the industry it should and can definitely come to us because देखिए आप सही कह रहे हैं कि बड़ी जो कंपनीज होती हैं they go for a big names. And like Mohit said कि even right now one of our projects is that हमने एक बड़ी कंपनी को एक बड़ी ही consultants के साथ bridge किया है. But then when I was in Engro बहुत सारी studies ऐसी भी होती हैं जिसमें you really want insight into the market but you do not want to spend so much money. And for that and what we do is before once bridging this gap or before making this partnership happen between the client and the consultant, हम client and consultant को आपस में introduce कराते हैं with confidentiality. And once the client is satisfied with the consultant, only then this partnership moves forward. So बहुत जाहिर है companies do understand कि it's not just कि अगर चीज महंगी है तो अच्छी होगी. मतलब आपको cost economic solutions can very well be very good, and we openly tell them why we are offering because our overheads are much lesser. So that is why we're passing on this. So they are open to it and खाली that mindset हमने खुद भी notice किया है कि वो थोड़ा सा पीछे चला गया है कि अगर चीज महंगी है तो अच्छी होगी. They're going for quality. They're not going for they're going for actual value, not the perception of it. That's wonderful. मोहित और you इंडस्ट्री के अलावा और कौन-कौन से सेक्टर्स हैं जिनको आप कवर कर रहे हैं? जैसे यूनिवर्सिटीज की बात आपने की थी आमना, और इसके अलावा कोई सेक्टर्स है? लेट अस नो प्लीज. हाँ तो जैसे आमना भी बता रही हैं आपको, एक जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कनेक्शन है, जो है कहते हैं जो एक वाइडर हमारे पास रिसोर्स पूल अवेलेबल है उसमें. तो उसमें अभी जो हमारे पास एक स्टूडेंट क्रॉप अप हुआ था, स्टूडेंट डेफिनेटली है. उसके अलावा एक और हमारे पास आ रही है कि जो बड़े कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, स्पेशली बिग 4 भी उसमें जाने के इंक्लूड होते हैं वो भी, जिसमें फाइनेंशियल एडवाइजरी भी हो जाती है सारी चीज़ें. उसके अलावा दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्पेशली एबल्ड पर्सन जो हैं उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको जाने के एक सपोर्ट बेस दे रहे हैं कि वो आगे कनेक्ट हो जाएं
और उसके लिए हमने एक और चीज़ ये कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो प्लेटफॉर्म की जो रिक्वायरमेंट्स, उनकी जो एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके अलावा जो उनको जाने के पिचिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी हम जो है प्रोवाइड करेंगे एज सॉल्व फॉर्म्स। इसके अलावा तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट वैलिड जो इस करंट सिनारियो में, पाकिस्तानी सिनारियो के अंदर है, कि वो जो पुराने हमारे जो कंसल्टेंट्स थे या इवन के जन प्रोफेशनल्स थे जो मार्केट में जाना कहते हैं अभी जो रिटायर हो गए हैं या होने वाले हैं, उनको भी हम जाना कहते हैं लेके आ रहे हैं वापस उस प्रोफेशनल बेस में, बिकॉज वो एक ऐसा पूल है जिसको जाना कहते हैं अभी तक टैप हम जाना कहते हैं कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। Yes. अच्छा, एज आई एम ऑल्सो फ्रॉम द इंडस्ट्री, और मेरे ख्याल से ये जो आपका आइडिया इट्स लिटरली अ वेरी कैची आइडिया, और आई बिलीव कि ये विद टाइम, आई बिलीव ये टाइम के बाद इंशाल्लाह इट विल ग्रो अप, और इसमें इट्स हैज अमेंस पोटेंशियल। मतलब प्रोजेक्ट्स जैसे ही आपके रोटेट करने शुरू होंगे, यू विल फील एंड यू विल सी द अमेंस पोटेंशियल इन दिस आइडिया। तो कंग्रेचुलेशन फॉर दिस व्हाट यू हैव स्टार्टेड, एंड इफ एनी फाइनल रिमार्क्स फ्रॉम योर साइड, Amna and Munib, please, over to you. So again, we'd like to thank you for having us. And I remember हमारी मेरी आपसे फोन पे ही बात हुई थी, तो आपने ये कहा था कि आप ये इसको लॉन्च तो कर देंगे, बट ये आइडिया कॉपी ना हो जाए। But again, it's all in good faith. It's absolutely in good faith. And if there's competition in the market, competition is always healthy for any category of business. अगर if our competitors want to come in, it's going to bring the bar up for both of us. एंड देन हम एमबीए में एक पढ़ते थे फर्स्ट मूवर एडवांटेज, एक चीज हम एमबीए में पढ़ते थे कि जो भी पहले मार्केट में आ जाता है ना, दैट एंड कैप्चर्स द मार्केट, कम्स इन द मार्केट एंड डेवलप्स द मार्केट एंड कैप्चर्स द मार्केट, दे ऑलवेज टेंड टू हैव दैट फर्स्ट मूवर एडवांटेज. So we're relying on that as well. And then again, the competition is always healthy. If there's quality, that will raise the bar for us and our competitors, for both of us. So thank you once again for having us and giving us this opportunity. And we would request everyone, because हमारी आप platform पे so हमारे platform पे आप जाएंगे solvecons.com, you'll see 2 buttons there. There's find an expert and become an expert. So you can register yourself as a consultant as well, because अब जो है market change हो रही है कि even if you're working for for a company, you can still offer your services. You can offer your services. If you are an expert in an area, you can work as a freelance consultant, not just for us. हमारे लिए तो we would invite you to work, but even otherwise as well. So that this philosophy is also, because agile working is there. So after hours, आप अपने office से काम की बात ही कर सकते हैं. So you can go to our website and you can become a consultant. And if you're looking for an expert, please definitely Solvecons is there for you. You go to our platform, and we will provide you the best in cost solution in very economical price. So solvecons.com, please आप लोग visit करें. Okay, do you have also an idea to create the application, the mobile place applications for that? मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन पे बिल्कुल है। जो अभी हमारा प्लेटफॉर्म है वो हमने जाना कि तो उसमें 2 चीज़ें की थी, ऑप्टिमाइज़ कर दिया था उसमें मोबाइल फ़ोन पे, लेकिन हम ये ऐप हमने लॉन्च नहीं की। ऐप हमारी जाना कि सेकंड फेज हम लॉन्च करेंगे। लेकिन जो आमने जो बात करी थी ना, वो क्लासिकल एक आईफोन वर्सेस सैमसंग वाला, एप्पल वर्सेस सैमसंग वाला जाना कि सिनेरियो है, जिसके अंदर जाना कि इवन तो एप्पल एक जाना कहते हैं वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं था उसके पास, माइक्रोसॉफ्ट वाज द फर्स्ट वन जाना जो स्मार्टफोन लेके आया था, लेकिन उसके लॉयल कस्टमर बेस है और सैमसंग की देख लें वो, सो ही हैज टू स्ट्रगल फॉर दैट. Yes, you're absolutely right. Chale, Amna, Munib, thank you so much for joining us, and I believe that this will encourage you, and the people will also contact you. आप अपनी information जो है ये इसी program के नीचे अपनी information आपने Munib डाल दीजिएगा, so people, if they want to contact you, they can easily contact you through your email address and the phone number. Thank you so much for being with us. No, it was a pleasure. Thank you so much. Thank you so much, Nasir, for giving us this opportunity. Thank you. Allah Hafiz. So nice. Take care. Allah Hafiz. Allah.